Central Executive Board NTPB laga Secretary Nangitio Opera First Winter Open Amateur Badminton Tournament ke grace kushe. Tournament to February 3 indoor stadium Mezipima Town Delushe. Mount Mary College para January 31 para February 2 tak nature camp conduct kushe. Etu to hole social science pedagogy laga second semester students or teachers para Grizwan Resource Center Konama Village Delushe. 3 दिन लगा block level resource person in career counseling phase 2 training inaugural program February 40 CRT Koima Delushe. Manipur police para February 2 और 3 te अलग-अलग district para nota active militants के गिरफ्तार कुशे. लोक सभा ते अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगा लीडर para महाकुंभ फेस्टिवल ते मानु मुरा लगा ऊपर चिंता सवाल उठाइशे. NLTV 2 p.m. breaking news is brought to you by Tram Footwear. Hello viewers, मैं बतौली अब तक न्यास सबके NLTV 2 p.m. breaking news से स्वागत करें. आई विल सवा खबर खान. Secretary Central Executive Board NTPB Nagaland Nangutio Opera First Winter Open Amateur Badminton Tournament February 3 day indoor stadium Mezipima Town te grace kushe. Gathering day as special guest address kra homoy Nangutio Opera Maki Khanbra inika sporting event organized kra nimite khushi janaishe. Taibara Maki Khanbra society ke shape krobole kinika khas role play kre to upor janaishe. Sports laga lab upor kotha kra homoy Taibara World Health Organization juntupra physical activity nimite advocate kuri thaki eto upor janaishe. Aro manukhan ke kam se kam ekta sports te physical aro mental well being nimite hissa lobole encourage kurse. Eto tournament to women shuttle Star Club Mezipima Town para sportsmanship aro community engagement promote krubole emraki kena organize kushe. Ekta free career guidance talks CTC Hall Chumukidimate February 2 din National Institute of Technology and Innovation Nagaland para ayojan kushe. Even ke Chumukidima Town Council Chairperson Losito Kropra grace kushe. Taipara Niti Nagaland ke praise kurgena Taikan laga initiative for future program support khaishe. Resource person kan takishe Niti Nagaland laga CEO Engineer Rishaf Sethi aro cyber security expert aro entrepreneur Pangir Kumzuk Longkumar. Event students amababa aro educators kan hissa loshe. Sob milai kena 120 students hissa loshe aro lucky draw khilate Kelen Changkun class 12 student ase taipara ekta smart mobile phone jitishe. Nikaro bishe career guidance program students ke modot dibole lagi ase koikena session ke khatam kurshe. Chief Minister Nefirio ke advisor TN Manan para accompanied kurgena February 40 district court stay infrastructure enhance kurgena aro justice delivery system ki improve kurubole opor dhyan dia rakigena meeting loise kurgena jani paise. Meeting lua homoy rio para Naga society te duita system para bi best interest dibole ensure kurubole customary aro judicial courts majote balance rakhibole importance janaise. Edu discussion te state legal framework te reform aro modernization lagi thaka upor highlight dishe kukena jani paise. Tin laga block level resource person in career counseling phase 2 training inaugural program February 40 SCRT Koima Delushe etu to hole Samagra Shiksha National para Antarang Foundation or Youth Net Logot Milligan organized kushe. Etu event day Kevilino Hangami Commissioner and Secretary of School Education and SCRT para special guest tagishe. Training laga first team day career guidance laga purpose team career readiness program laga elements aro Nagaland day itu laga impact aro master trainer laga role upor focus kushe. Participants kan ke students laga perspective day lesson experience kurubole opportunity dishe etu program Kelhima Kenya Deputy Mission Director Samagra Shiksha para chaired kushe.
in schools. The first question is, why counseling in schools? Now that leads us to, why do we send our children to school? Or why do we have schools? So the first answer would be, we send our children, we have our schools so that our children would learn to read and write. Our children would be educated, to gain knowledge, to learn the life skills, social skills, but ultimately to also find a career path for them, so that they have a livelihood in life. So that becomes our school, the medium which would provide all this would be our schools through our teachers. Now many of us present here, including me, we have chosen our career paths without anybody's guidance, without anyone providing us that guidance that this would be good for you. You have an aptitude to take up science, you have an aptitude to take up art. No one had provided us that guidance. We did on our own, we chose on our own, whether we had the strength or whether we did not have the strength. And this is the trend even now. Our children in schools, in the secondary schools, they offer science because they find it hard, they don't find it hard, or because some of their friends have opted for them, because they would be having the same friends in the same classroom, in the same section. That is why they opt for Education Policy 2020. It talks about flexibility of the curriculum. It talks about integrating the arts in the curriculum. It talks about integrating physical education, sports, crafts, arts in the curriculum. And we are required to provide all these disciplines, multi-disciplines, in our schools, in our colleges, in the days to come, so that children have that flexibility, that option to choose. The government of India has also mandated that we provide vocational education in our schools. And accordingly, through Samagra Shiksha, in our government schools, we are providing vocational education in more than 100 schools, 153 or so. And that will increase, but it's still very limited, with very limited discipline, and we need to increase the number of disciplines in these schools so that children have the option to choose. Government of India has also mandated that we start with the backlist days in schools, and so we have started with the backlist days in the middle section, in the middle, the GLS, and this is to provide exposure to our children to the various career options available. So that is why at this point in time, it's very necessary, it's very important that we start somewhere with career counseling. And this career counseling is expected to provide the information, necessary information to our children, to our students, so they take informed decision as to what is good for them. And through career counseling, through our teachers, they will be able to assess their strengths, their weaknesses. The career counselors would be providing the demands, the information of the demands in the job market. They would also be assessing the strengths and weaknesses of children. So children would know that this is their strength, this is their weakness. So wherever their strengths are, they have to follow, they can follow that career path. Ultimately, it is dependent on the children. But it is our responsibility to provide that guidance to our children. So we are grateful to the Antaran Foundation at NewtNet for coming forward to train the trainees available here this morning. They will be the master trainers, and they will go back to their respective schools, to the blocks, to train the teachers. We are required to provide
counselor, career counselor in each of our schools. But that will take some time. But with all of you here, it is our hope, our expectation that step by step we will be able to provide career counselors, career counselor teachers in our schools, in our blocks, so that we guide our children to take up, to choose the right profession which will give them satisfaction in life, profession by which they will be able to give back to the society. So I wish all of you very fruitful training program, and please keep in mind that the training, through this training, the expectations from the government on you is also high, and we look forward that whatever training you gain here, whatever capacity building takes place here will bear fruit in our schools. এতিয়া অলপ ব্ৰেক ল'ব, চাই থাকিব NLTV। Welcome back. I will cover Kansailwa. Mount Mary College para January 31 para February 2 tak nature camp conduct rushi. Itu to holi social science pedagogy laga second semester students ara teachers para Gizwan Resource Center Konama Village Dilushi. Even to Nagaland Pollution Control Board para Environmental Education Program laga undertake organized kushi kushi. Kude camp te students ara teachers kanke Kribu Miasa licensed nature guides para Lukina Polwate sheep farm visits Krubule experiential learning opportunity dishikushe. Camp laga focus to Konama Village te environmental conservatory biodiversity aro sustainable practices te bhal para aro bujai dibole luishikushe. Miasi para jungle laga ecology te alag alag aspects per insight dishikushe. Tobo headquarter day February 3 din public rally Lucia government of India ke India Myanmar border day border fencing aro free movement regime provision of 2018 retained krubole upor bhabna khuri sabole appeal kushi rally to Congo Konyak Tasu president pra church kushi Mangpo Konyak General Secretary of Konyak Union Monpra India Myanmar border laga history of Kota kushi aro Yang Dabo treaty aro itu laga subsequent modification of Kota kushi type ra aro kushi ki border fencing kriya pra Konyak families kan ke digdari dibo kile mane bishi bhag to keti aro livelihoods karni Indian sites te rally kuri kushi juntu pra taikan laga jivan de bishi digdar dibo kushi program to Kupong unit laga representative Shipe Mary president of KNSK Tobu unit aro SA Gamlya KU unit Tobu Kanpura speech dish students Kanpura placards dikaisha aro rally to ADC Tobu ke memorandum submit kriyana khatam kushi India ase kunna bhi jani rakha nai Burma ase kunna bhi jani rakha nai ulku ami ka sab de rakha nai manu but tane bhi sa nai Bagan nije amakan la bagan do hak police ifale
আছে ইফালে বৰ্মা লগা মাটি কিমান আছে বি তাকান মন দেবি ভাবতা নাই খুচি খুচি মহান লগা বাগান মাজৰ পৰা যাই কেনে বজৰ না ভাগ কৰিছে আৰু এইটো লগা এতিয়া তাক লিভিং এক্সাম্পল এতিয়া লংগা বস্তি আছে লংগা বস্তি বাজৰ পৰা যাই কেনে ভাগ কৰি দিছে মাটিটো এইটোতো আমি খান কিন্তু একদম হিচাপ নকৰা লগা কাম কৰা আছে পইলা হলেকি আমি খান একো জানা নাই হলেকি এইটো পিছে দেবি আৰু তাইখান খুচি খুচি তাইখান 1834 আৰু ভাগ কৰিছে মডিফাই কৰিছে 1881 দেবি মডিফাই কৰিছে 1894 দেবি কৰিছে 1896 দেবি কৰিছে 1921 দেবি কৰিছে লাষ্ট আমি খান 1892 দে লাষ্ট আমি খান কি কৰি দিয়াটো 1967 10 months to taken final কৰি দিছে ইটো টাইম দেবি আমি খান লগা কনসেন্ট লোৱা নাই আমি খান যে উদা নাই আপনি খান লামাটি কিমান তাক আছে কি তাইখান হিচাপটো থাকা নাই তাইখান নিজে ফাট কৰি দিয়ে না এতিয়া তোকো মুখং লামাটিটো বৰ্মা ফলে কিমান চাৰি দিছে হৈ কেনে এতিয়া তাক কেনেকা আহি কেনে তাইখান 2018 আৰু হলে কি কৈ কেনে তাইখান ফ্ৰী ৰিজিম মুভমেণ্ট কৈ কেনে তাইখান ওলাইছে আমি খান কিন্তু থাকিছে কিন্তু তাইখান নিজেও ফেব্ৰুৱাৰী ওলাইছে 16 কিলোমিটাৰটো বেৰাব পাৰিব বৰ্মা লাগি বেৰাব পাৰিব ইণ্ডিয়া লগা পজাখান বি বেৰাব পাৰিব Fencing will severely impact the livelihood of the indigenous communities living along the borders. From business gurahabi, culture exchange gurahabi, economically activities, public relations, socially, economically, disrupt practices. Secondly, indigenous communities point out one in a relation to Itu over the mahal itu fencing lagai tissue bolido. It will disrupt our traditional ways of life and ignore our rich culture heritage. Mahala ekta disrupt pura mahalla punjab naga karde ekta ina hoi jais. Itu ade bahut aji mahal protest kora itu karde prina ase. Aro moi kobli mon jado aji mahal itu ready de chama kora do. One border sharing ekta ase between Indo-Myanmar. One itu ke 1,643 kilometers. Ina ase itu over the tahan only 10 kilometers disal tahan the Indian government. Na tahan all of the 10 kilometers has been built. Imata kodai na so hindi bi mohang ke deadline kiya na itu pa itu date itu khotom hobo lage itu saade itu khotom hobo deadline eko kiya na. Aro mon itu majide mon over 200 villages are there. Itu majuri iman ase tu itu an chari dise mon border polai dise mon la relation harai ja ase mon la mobile phai kan ba ase khor mado han bi ase itu an ko jabo na ina na hobo lage itu kare aji mohan chama brother punjab citizens kan punjab naga han kiman ase don't be in a deep slumber now italo wake up so italo mon la rights ki ase itu mohan timan NH29 kuntu monsoon season day ta tragic incident area se etu jagate improvement hwa tu dikhi paise NLTV para ground report lwa homoi dikhi paise ke NHIDCL kunke etu NH29 te safety measures tali bole karne contact digena ase tai kan kam kuru bole karne shuru hoi shikushi aro etu kam kura to almost 1 month hoi shikugena janai dise So viewers, amnigan visuals TV tigole para ashina, aro amila Pexai TV tigole para ashina. Workers kan amigan public kan laga safety ni mede, takan na life to risk te rakigena kam kura to amigan diki paise. Aro itu iklan no igina, itu kam kura laga in-charge lo TV amian indirect kura damde. Taibra amian ke janai dishe ke itu kam do olop tin kani rukhai gena dekse aro itia to kam continue hui gena do almost 1 month hoye sugina amian ke janai dishe aro taiba amian ke janai dishe ke takan itu drilling gure ase aro kundo jaga te rock falling bishi hoye itu jaga te takan net thalibo kena bi amian ke janai dishe aro tan itu net to pura NH29 rasta te thalibo kena amian ke janai dishe to amian akha takibo ke itu sal do last year de itu monsoon season de hator kirawa manu mura aro properties kan damage wa inaga khopor incident ina khopor kan nohuni gena itu sal do monsoon season do iku pia khopor nohuni gena par hobo gena bi amigan itu la opor de akha takibo to viewers
एकता 7 साल चक्र दोयान नदीते सानडे शाम 2 बजेते डुबिकेना मौत হৈছে কইনা জানি পাইছে বাচ্চাটো दोयान आइस प्लांट আৰু নদী ওচৰ ফুটবল খেলি থাকিছে আৰু কিতিয়া বল পানীতে গুছি যাইছে তাই পৰা ওলাবলৈ যাইছে হলিবি গায়াব হৈ গৈছে কৈছে কিতিয়া চক্ৰকে বেছি দেৰি ৰখিকেনা वापस আহা নাই তাই লগা সাথী কানবৰা তাই লগা বাবাকে খবৰ দিছে কৈছে বাবা পৰা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট ডিজাস্টাৰ ৰেসপন্স ফোর্স के इतु दिन ही खबर दिसे কৈছে इतु पिछते डेप्युटी कमिश्नर পৰা टीम के सानडे शाम ही जगाते तलाश কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে কৈছে SDRF লগতে নেশনাল ডিজাস্টাৰ ৰেসপন্স ফোর্স আৰু নাগালেণ্ড ষ্টেট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি টিম পৰা মিলাই কেনা একটা ওয়াটাৰ ড্ৰোন আৰু ডাইভাৰ্স কানকে কামতে লগাই কেনা বাচ্চাকে মানডে দিন বাজি নিশনাতে ঠিক পৰা বিচাৰিছে কৈছে অথৰিটিজ পৰা জনাইছে কি চানবিন শুৰু কৰিবলৈ দেৰি হোৱা যাদু নদীতে পুৰানা মাছ লগা নেট আৰু জাবৰা খান বেছি থাকা পৰা আছে কৈছে Assamte Dibrugarh University International Literature Festival ga second edition University je February 5 pra 8 tak lobole ase kuikena jani pai ase etu festival do ole University aro Guwahati based Foundation for Culture Arts and Literature pra organize kora laga ase etu festival ga second edition de 25 days pra 120 upor authors pra hissa loi ase kuise to har de 50 session aro workshops thakibo koi ase kote alag alag global award winning authors poets aro scholars kan ke taikan laga literary wisdom aro experiences share krubole platform dibo kuise etu lokot etu tihar de Indian authors aro north east pra cast writers kan bi feature krubole ase kuikena janai paise Arunachal Pradesh Adi tribe laga Bori community kan pra taikan laga dogging Tot festival jo February 2 te manaise Lamrung Gangching Pasigate New Year mark rugina etu annual festival jo January aro March laga majete manai aro etu festival jo abundance prosperity laga celebration ase aro natural deities ke shanti bal jivan aro successful farming season nimite parthana kure kuise Dr Dilong Padung Ustad Bismala Khan Yuva Puraskar award aro Tabang Gaduk Deputy Forest Ranger Kanpura event attend kushi aro festival laga cultural importance kan highlight kushi Dr Padung bara traditional aro modern elements blends kurigena gana bana bole plan announce kushi etu occasion de rituals kan perform kure aro ghari aro mithuns kan sacrifice kuri kugina aro calamities disease aro incidents bara bachabole parthana kure kushi Roying MLA Muchu Mitibara Monday din zero hunting signals inaugurates Krushia Ahali village Arunachal Pradesh te edu to hole IDU community laga 56 Ray Festival lua homoite Krushia Mebo MLA Okhin Tayan Pasigat East MLA Tapi Darang aro Mairang Geku MLA Onipayang Khanpura event attend Krushia Mitibara bosti ke zero hunting initiative for tarif Krushia Jun to laga maksud tu forest aro wildlife ke bachabole nimiti ase tayang para basti manukan ke taikan laga bold declaration upor launch kushi aro tourism karne natural resources preserve krobole lage kushi etu initiative to tourist aro chief minister Pema Khandu para bi appreciate kushi Assam Rifles para Wongtoi Bosti Manukan Lokot Miligana Plantation Drive Ekta Wongtoi Village Noklakte Monday din ayojan kurse Drive lagai sa banai kena 50 saplings mati te lagaise Initiative for Environment Hohoi Kurubole aro dunia ke bachai rakhibole laga maksate awareness loise guse sob milai kena village chairman Gao Buras aro Pipima para kisim youth clubs nishna Bosti Manu hissa loise guse Assam Rifle hisab Village Council or Security Forces bitor rishta banai rakhibole babna loikena drive ke ayojan kurse Assam Rifle para aro security meeting ekta Pipima company Chumukirima district e ekidin ayojan kurse guse
मणिपुर पुलिस पर February 2 और 3 जे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स पर 9टा एक्टिव मिलिटेंट्स की गिरफ्तार कृषि कुएसे पास्ता गंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री पुखरी तकुबराई इम्फाल ईस्ट दुरिशि कुएसे पुलिस पर 9mm पिस्तौल हैंड ग्रेनेड्स मोबाइल फोन्स कैश और 4-व्हीलर्स ताइकान लगा हाथ पर दुरिशि कुएसे तोबाल डिस्ट्रिक्ट पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ गंगलेपाक लगा एकटा मिलिटेंट के मोबाइल फोन्स और 4-व्हीलर लगा दुरिशि कुएसे एतुनिशना और अलग KCPMC Progressive Cadre Junto Extortion de Shamil Takishi Taikan Kibi Imphal West 2-wheeler 4-wheeler aro mobile phone lokho turishi kwese aro United People's Party of Kangleipak laga ekta manu ke Kakching district ke locals ke alag-alag identification cards chalaigina extort kra homoy giraftar kushi kwese kudi tai laga hath para mobile phones aro 4-wheeler seize kushi kwese Britain's Duke of Edinburgh Prince Edward pra Mandijin Vice President Jagdeep Dhankar ke Vice President's Enclave New Delhi te lok paise Prince Edward to India te tailaga 3-day visit shuru kushe Sandijin tailaga visit pra duita desh laga shared ties ke celebrate kushe Edward to King Charles 3 laga chotu bhai ase tailaga trip te Mumbai aro Delhi visit krobole ase Duke of Edinburgh's International Award ke promote krobole karne juntu tailaga late father Prince Philip pra shuru kushe 1956 te King of Bhutan Jigme Kesar Namgyal Wanchuktu Tuesday din Prayagraj Punjishe Mahakumbh visit krobole nimite Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath para King ke Mahakumbh te accompanied kushe Bhutan King para Triveni Sangam te Gosol krobole ase kuigena official statement para janaise King to Monday din Lucknow Punjishe aro Yogi Adityanath para Chaudhary Charan Singh International Airport te swagat kushe Lok Sabha te Akhilesh Yadav Samajwadi Party laga leader para Mahakumbh Festival te Manumura opor chinta laga sawal uthaise Yadav para sarkar ke kiman manumurishe aro kiman jokhum paise etu laga details dibole mang kurse Yadav para transparency lagi thaka opor janaise aro kile sarkar tu dangur crowds ke monitor krubole modern technology jenika CCTV aro drones kan chalai kena bi manumura aro jokhum pa laga exact number disclose kura nai koi kena sawal kurse Yadav para crowd control emergency response aro jokhum paigena thakya khan laga condition upor report mang kurse enika kurgena etu issues to parliament te accountability aro public awareness nimite address krubo lagya koikena janaise जाना हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है निंदनीय है इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए अध्यक्ष महोदय महाकुंभ की जो तैयारी हुई जो हम लोगों ने जाना वहां पर महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है सीसीटीवी ड्रोन लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है हमारे अपने लोग मारे गए हैं जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है किसी की माता किसी के पिता किसी की बहू किसी की बेटी किसी का भाई बहन चाचा चाची बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं खोया पाया केंद्रीय लोगों
को तो नहीं मिल रहा है, जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता ये है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है, कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अभी 1 मिनट दें, आप लोग कुछ मत बोलिए। नहीं कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है, और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं, हालांकि वो बात मैं बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच पाया है उनको दंडित किया जाए। मध्य प्रदेश शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट बिटर मंदिरते फूड फेस्ट ऑर्गेनाइज करियाना थाकियाते खाना खा पिछिदे 200 मानु ओपर बीमार होइसे। अफेक्टेड मानु कांटु मामुनी काला ग्राम पंचायत अंडरते थाकिया बस्ती परा थाकिसे और मंदिरते डांगर फीस्ट ऑर्गेनाइज करियाना थाकियाते जाइकेना खाना खाइसे गुसे। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ते जानि पाइसे कि बस्ती मानु कान फूड पॉइजनिंग होइसे गुकिना। जो सरपंच साहब द्वारा बताया गया है कि परसों यहाँ भंडारा हुआ था। भंडारे के बाद जो दूसरे दिन इनका जो प्रसादी की जो सामग्री थी उससे पूरे गांव ने उसको सेवन किया है, जिसकी वजह से एकदम से ये पूरे गांव के लोग बीमार हुए हैं फूड पॉइजनिंग के कारण। करीब 30 से 40 मरीज तो सीएससी के लिए भेजे हैं, कुछ पीएससी से शॉर्ट। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू पर राहुल गांधी के क्रिटिसाइज कृषि टाइपरा पार्लियामेंटे बीजिंग लगा तारीफ कुरा निमिते रिजिजू कोइसे कि गांधी लगा कथा तो चाइना के बिशी सपोर्ट कुरिया निशना आसे कुसे। रिजिजू पर गांधी के 1959 और 1962 ते चाइना टेरिटोरियल क्लेम्स पर माफी मांग बले डिमांड कुसे। जिंजो हमोइते गांधी लगा ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थकिसे। रिजिजू कोइसे कि जुदी गांधी पर ताइलगा रिमार्क्स ऑथेंटिकेट करबले नापारले ताइलगा असर एक्शन लोबो कुसे। गांधी पर इदु कमेंट्स तो लोकसभा डिबेट प्रेसिडेंट लगा एड्रेस मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा करा हमोइ कुसे। एक तो चीन का प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन का तारीफ आज नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में किया।
भारत के संसद में चीन का गुणगान इतना गाया मैं तो आज तक जिंदगी में सुना नहीं है। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी से आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं 1959 में और 1962 में जितना जमीन हमारा देश का जमीन, चाहे वो लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, 1959 और 1962 में जितना जमीन चीन ने कब्जा किया है उसके लिए श्रीमान राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उसी का परिवार, उसका दादाजी प्रधानमंत्री थे। इसलिए मैं आज ये मांग करना चाहता हूं, सुरेश जी आप सीनियर मेंबर है, आप 8 बार चुनाव जीत के आए हैं, आप सीनियर हैं, राहुल गांधी जी को आप समझा दीजिए। अभी राहुल गांधी जी बोल के चले गए, लेकिन आप समझा दीजिए, ये भारत का संसद है, इस देश में हमारे भारत के संसद में भारत का अपमान हम नहीं सह सकते हैं। श्रीमान राहुल गांधी को आज हम छूट देंगे तो कल को आकर के कोई भी नेता प्रतिपक्ष कुछ भी बात बोलेंगे और निकल जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बात रखे हैं 6 पॉइंट्स को वो ऑथेंटिकेट जरूर करना चाहिए, अन्यथा जो उचित कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी कलकाजी कैंडिडेट अतिशी ओपर FIR रजिस्टर्ड कुशे ताइपरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट्स करा और पब्लिक सर्वेंट्स लगा काम ते दिगदारी दिशे कुगेन एक्यूज कुशे इदु घटना तो अतिशी और 50 to 70 सपोर्टर्स खान दोस्ता गाड़ी बड़ा फटी सिंह मार्क ते जाइशे इतो होमोइते ताइ ऑफिसर DTT थाकिया एकजुन लगा काम रुखाई दिशे ऑफिसर बड़ा एरिया चारिकेना जाबोले क्वाटू मना नाय कुशे अतिशी बड़ा इलेक्शन कमीशन के एक्स से क्रिटिसाइज कुशे और कुशे के बीजेपी लगा रमेश बुधुरी और ताइ लगा फैमिली बड़ा हुलीगानिज्म कुशे किंतु ताइ खान लगा खिलाफ इको एक्शन लुआनाय और अतिशी लगा खिलाफ केस दर्ज कुशे कुशे NLTV 2 PM breaking news has been brought to you by Tram Footwear. इटा करने मन तक तकिशे इनका न्यूज़ और अपडेट्स पाए टेकी वाले साइट टेकी NLTV